just finished watching United versus Leeds, and it was an insane game. 90 minutes just flew by, completely breathless. You know, football at its entertaining best. Both teams playing with a lot of courage. हर बॉल के लिए फाइट हो रहा है, and neither of the team looked to play on back foot. So, brilliant and compelling watch. First of all, United was without Casemiro and Eriksen, and it was a huge loss because ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको तुम रिप्लेस नहीं कर सकते हो बड़ी आसानी से. बहुत क्वालिटी है, एंड ऐसे प्लेयर्स अगर मिस करेंगे तुम्हारी टीम से तो यूर टीम विल स्ट्रगल. सो Sabitzer got his debut and he played alongside Fred. And honestly, both of them had a decent game. Sabitzer had a good game in particular. But Casemiro और Eriksen नहीं है तो तुम स्ट्रगल करोगे डेफिनेटली. तो यूनाइटेड के लिए ये गेम ईजी नहीं होने वाला था. On the other hand, Leeds was also in a weird position because जैसी मार्च को जस्ट रिसेंटली उन्होंने सैक किया, सो उनके अंडर 21 मैनेजर माइकल स्कुबाला को चांस मिला फर्स्ट टीम को मैनेज करने का. एंड वेस्टन मैकेनी वाज मेकिंग हिज डेब्यू फॉर लीड्स. मतलब इस मैच से पहले मुझे पता भी नहीं था कि यूवेंटस ने मैकेनी को लोन कर दिया लीड्स के लिए. सो इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी. So anyways, the game starts and right from the kickoff, the atmosphere is amazing. It's absolutely electric. So for those of you who don't know, United or Leeds, बहुत पुरानी rivalry है. It goes decades back in those days when Leeds used to compete for the league titles. In fact, 91 में Leeds won the title before the official beginning of the Ferguson era, if I'm not mistaken. So both sets of fans absolutely hate each other. And it was a late night game, so amazing atmosphere, absolutely electric. So right from the kickoff, Leeds were ultra aggressive in the press. United के own half में उन्होंने ball steal किया, फर्नांडिस से mistake करवाया, Fred was out of the position, Gnonto played a 1-2 with Bamford and bam, struck a goal past the air. And all of this happened within just first minute. 55th second में Gnonto scored that goal, and Gnonto again such a raw talent, this guy, 19-year-old only. और अगर ये अच्छे से डेवलप करता है तो ही विल बी अ सेंसेशनल प्लेयर इन द फ्यूचर, नो डाउट अबाउट दैट. बिट ऑफ शिटहाउजरी फ्रॉम हिम एज वेल, डूइंग द रैशफर्ड ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन राइट इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड फैंस, विच इज बेसिकली जो कि रैशफर्ड का भी नहीं है वो ट्रेडमार्क, ठीक है. रैशफर्ड ऑल्सो स्टोल इट फ्रॉम समबडी एल्स, बट रिगार्डलेस फर्स्ट 15 मिनट्स में लीड्स वाज ऑल ओवर यूनाइटेड, और यूनाइटेड वाज नॉट एबल टू कंट्रोल द गेम, ठीक है. थोड़ा टाइम बाद यूनाइटेड वाज एबल टू गेट द होल्ड ऑफ द बॉल and they were able to control the game still thoda bahut, but they were struggling to create through the middle because again wo Casemiro, Eriksen और Bruno का linkage नहीं था, and Sabitzer was playing his first game and out of position as well, so it was going to be difficult for them to create through the middle. So United had to adapt and most of that creativity had to come from the wide areas. और हमने देखा इस सीजन काफी बार कि ब्रूनो फर्नांडिस और रैशफोर्ड स्विच करते हैं अपनी प्लेसेस को, एंड ब्रूनो फर्नांडिस गोज वाइड टू क्रिएट फॉर यूनाइटेड फ्रॉम दोज वाइड पोजीशंस, जो कि उसने अच्छी चांसेस क्रिएट भी करी. गार्नाचो के लिए एक बहुत अच्छी बॉल उसने दी इन द मिडिल एंड ही वाज नॉट एबल टू फिनिश. गार्नाचो मिस्ड 2 chances एक्चुअली, ही हैड 2 great chances in the first half itself, but he was not able to finish. So anyways, first half flew by, 45 minutes. You're thinking second half cannot be that good, right? Wrong. Second half starts and Leeds were again ultra aggressive with their press, and within a few minutes only they created the second goal also. अगेन अपनी प्रेसिंग के कारण ही अब वो सिचुएशन में आ पाए जहां पे वो गोल स्कोरिंग पोजीशन बना सके. एंड ऑल्दो इट वाज एन ओन गोल, राफेल वेरान का डिफ्लेक्शन एंड गोल हुआ, बट द वे दे क्रिएटेड दैट सिचुएशन दे डेफिनेटली डिजर्व दैट गोल. सो नाउ दे आर 2-0 अहेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड एंड यू आर थिंकिंग कि यार लीड्स यूनाइटेड को हरा देगा ओल्ड ट्रैफर्ड में, जो कि उनके लिए एक फोर्ट्रेस रहा है इस सीजन. 13 गेम्स अनडिफीटेड है यूनाइटेड इस सीजन ओल्ड ट्रैफर्ड में. एंड यू आर थिंकिंग कि मे बी ये स्ट्रीक फाइनली आज लीड्स यूनाइटेड ब्रेक कर सकता है, बट देन अगेन टेन हाग कम्स इनटू द पिक्चर. उसको दिख रहा है भाई गेम हाथ से बाहर जा रहा है. इट डज नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस. आउट गोज वेगहॉर्स्ट एंड गार्नाचो, हु बोथ स्ट्रगल्ड इन द गेम, एंड इन कम्स पेलेस्ट्री एंड सेंचो. सो द सिस्टम डजंट चेंज, स्टिल अ 4-2-3-1. Rashford is now playing through the middle, Pelistri on right and Sancho on the left. नाउ पेलेस्ट्री को पहली बार मैंने देखा था वर्ल्ड कप में यूरुग्वाई के साथ खेलते हुए, और आई थिंक मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी था जब मैं किसी यूरुग्वाई के मैच को रिव्यू कर रहा था कि यूरुग्वाई हैड अ वेरी पुअर टूर्नामेंट एंड अ वेरी पुअर मैच, बट पेलेस्ट्री वाज द ओनली पॉजिटिव दैट आई कुड फाइंड इन दैट पर्टिकुलर मैच फॉर यूरुग्वाई. ही इज वेरी डायरेक्ट, ही इज वेरी पेसी, and his movement is just phenomenal. He played a key role in setting up the first goal.
यू नो सेटअप किया उसने डालो के लिए, और डालो ने उसने क्रॉस डाला बीच में, एंड रैशफोर्ड scored with the header. So he set up the first goal, and Sancho, the second substitution, scored the second goal. So both these substitutions made a huge impact on the game. Sancho का गोल आया लूक शॉ के एक रन से. लूक शॉ took the ball in his stride and he made a beautiful run on the left hand channel. Sancho के साथ उसने अच्छा link up किया, and eventually ball fell to Sancho and he scored a goal there. And Luke Shaw in particular has been such a key player for Ten Hag. You know, ये बंदा काफी अंडररेटेड रहा है इस सीजन में. ही इज अ ह्यूज प्लेयर फॉर टेन हाग, और ये यूनाइटेड के रिसर्जेंस के लिए, यस कैसेमीरो, एरिक्सन, ब्रूनो फर्नांडिस, रैशफोर्ड आर देयर, बट लूक शॉ's contribution should not go unnoticed. You know, अंडर द रेडार गए इसके contributions काफी. ही इज वेरी assured with the ball, बॉल के साथ पॉजिटिवली रन करता है, links up well with the wingers, and even his crossing this season has been very very good. So completely an unsung hero according to me for United this season. And Sancho is just returning from the injury, but the way he started last few games for United is showing very positive signs. हो सकता है कि Sancho का resurgence अब शुरू हो, because now he's coming into a team which is more on an attacking thrust, or a team which is more gelled up well. So Sancho will benefit from that, and maybe this will start him off. उसका करियर अभी तक स्टॉप एंड स्टार्ट करियर रहा है उसका अभी तक यूनाइटेड के लिए. इनफैक्ट ही वॉज नेवर एबल टू लिफ्ट ऑफ प्रॉपरली, बट हो सकता है फाइनली इन दिस पर्टिकुलर टीम ही इज एबल टू मेक दैट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ही कैन प्ले विद कॉन्फिडेंस एंड बी दैट प्लेयर दैट वी सॉ एट बोरोसिया डॉर्टमुंड. सो एनीवेज 70th मिनट में गेम इज पॉइज्ड ब्यूटीफुली एट 2-2 एंड बोथ टीम्स आर गोइंग फॉर इट. यूनाइटेड हैड एन अपर हैंड ऑब्वियसली बिकॉज वो अपने होम में खेल रहे हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हैं, crowd is behind them. But Leeds was also not just there to sit back and defend only. Every opportunity they got to go forward and to create something, they took it and they went for it. दोनों teams gave up नहीं करी 90th minute तक, but unfortunately they could not score any goal after that, and it ended up in a 2-2 game. But it was a phenomenal match. It's 3:45 in the morning. I have to go to the office. I have to be up early, and I made the mistake of tuning into a Premier League, late night Premier League match, thinking कि यार मैं सो जाऊंगा, पूरा मैच तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. But do not make that mistake, especially if you have to get up early, in the morning. But anyways, I hope इस रिजल्ट के साथ सारी जो नॉनसेंस चल रही है कि यूनाइटेड का टाइटल रेस में होना, यूनाइटेड बीइंग टाइटल चैलेंजर्स, I hope that nonsense argument ends now, because United was never in the race. It was just a narrative run by a few people, because to them it's, I don't know why it came through, but it sounded appealing to them perhaps. But I hope that particular nonsense ends. So I'm going to go to sleep now, and I'll see you in my next video where I'll be discussing is Haaland making Manchester City worse. ठीक है, फुल ब्लोन एनालिसिस करने वाला हूँ उसमें, उस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक पे. बहुत लोगों ने बहुत बकवास करी उस पर, बट विल बी वॉचिंग इट, विल बी सीइंग इट ऑब्जेक्टिवली. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वन. अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम. जय श्री महाकाल.